गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पास कोर्स और ऑनर्स को पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। खूब आप लोगों ने सबने इनको वीडियोस को देख रहे होंगे और प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे होंगे। आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, थ्योरम नंबर 1, the values of the divided difference, the values of the divided difference remains unchanged by interchanging the suffix of the operator, suffix of the operators and operand विभाजित अंतर उनके चरों के सममित फलन होते हैं। अर्थात किसी विभाजित अंतर में के मान उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब यह है कि the values of the divided difference remains unchanged by interchanging the suffixes of the operators and operand। विभाजित अंतर उनके चरों के सममित फलन होते हैं, अर्थात इनके जो चर हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में, इनका किसी से कोई वो नहीं होता, डिपेंड नहीं होता किसी पे। तो प्रूफ, let f of x0 x1 first divided difference delta f of x0 x1 equal to f of x1 minus f of x0 upon x1 minus x0। If we change this, so if we take this one f of x1 change minus f of x0 minus f of x1 upon minus x0 minus x1 change minus taking outside, so this implies f of x0 minus f of x1 upon x0 minus x1. So therefore f of x1 x0 means it is same as x0 x1 which is equals to x0 x1 equals to f of x1 x0 means इसके अगर अपन वेरिएबल्स को चेंज करते हैं तो वैल्यूज आर सेम। सो दिस कैन बी रिटन एज ऑल्सो, इसी को फॉर्मेट में लिखना हो तो therefore मैं इसको मिटा के आपको यहीं पे समझा रहा हूँ कि f of x0 x1 equals to f of x1 upon x1 minus x0 minus f of x0 upon x1 minus x0, so which is equal to f of x1 upon x1 minus x0 प्लस कर दिया मैंने, तो f of x0 और x0 minus x1, so we can write this is equals to summation from f of x0 upon x0 minus x1 means sum, it is given by sum, ये अपन को sum को डिनोट करता है और इसमें टू वेरिएबल है x0 and x1, तो which is equals to this form summation f of x0 upon x0 minus x1, so we can write here f of x0 upon x0 minus x1 plus f of x1 upon x1 minus x0 means हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। सिमिलर वे में फॉर द सेकेंड डिग्री
divided difference, we can write second degree divided difference. Therefore, f of x0, x1, x2, which is equals to f of x1, x2 by the definition f of x0, x1 upon x2 minus x0, x2 minus x0. So this can be written as 1 upon x2 minus x0 and f of x1, x2 minus f of x0, x1. This is equals to, this is the first divided difference. So we can write 1 upon x2 minus x0 and f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1 minus f of x1 minus f of x0 upon x1 minus x0. This is equal to this one, and then we can arrange in this form f of x2 upon x2 minus x0 and x2 minus x1. अब देखिए f of x2 upon x2 minus x1 और x2 minus x0. Then f of x1 में देखिए minus f of x1 हम कॉमन निकालें तो इन साइड में x2 minus x0, x2 minus x1 और x1 minus x0. जब हम इसको लेंगे तो ये फॉर्मेट इसका बन जाएगा f of x1 upon x1 minus x0 and x1 minus x2, then plus f of x0 upon x0 minus x1 and x0 minus x2. So this is equal to, ये प्लस में आ जाएगा. So this is equals to summation फॉर्म में f of x0 upon x0 minus x1 and x0 minus x2. So f of x0, x1, x2, there are the three arguments, three values of this independent variable. So we can convert into this f of x0 upon x0 minus x1 or x0 minus x2. So it does not depend on the variables. So similar way में if we take nth term, then we can write in this format. Then we can write in this format that f of x0, x1, x2 up to xn, which is equal to summation form f of x0 upon x0 minus x1, x0 minus x2 up to x0 minus xn. So this can be written also f of x0 upon x0 minus x1, x0 minus x2 up to x0 minus xn plus f of x1 upon x1 minus x0, x1 minus x2 and up to x1 minus xn plus up to dash 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 f of xn upon xn minus x0 and xn minus x1 up to xn minus xn minus 1, xn minus xn minus 1. So this shows that it does not depend on the variable. It shows that it does not depend on a variable. Next theorem. So it shows that divided difference does not depend on variables. So चल के सम्मिलित होते हैं, समन्वित होते हैं और हम इसको इस रूप में लिखते हैं. The next theorem is nth divided difference of a polynomial of n degree are constant. हमने पीछे भी theorems की थी for the properties of the divided difference or simple difference. It has taken a property now that next theorem number 2, the nth divided difference
the nth divided difference of a polynomial of the nth degree are constant. nवां विभाजित अंतर ऑफ n घात के पॉलिनोमियल का nवां विभाजित अंतर कांस्टेंट होता है। ये थ्योरम प्रूव करेंगे। हम लोग जानते हैं, लास्ट वीडियोस में हमने बताया था कि फॉरवर्ड टेबल में भी हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में भी देखा था कि पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री ऑफ nth डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये हम प्रूव कर चुके हैं पीछे के वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ fx इक्वल्स टू xn लेट, ये हमने एक प्रॉपर्टी ली एंड देन हम टर्म ले रहे हैं xr और xr प्लस 1 के लिए, वे r इक्वल्स टू 0 1 2 12, ये n डिग्री के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। सो देयरफॉर वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ xr और xr प्लस 1 इक्वल्स टू f(xr) प्लस 1 माइनस f of xr अपॉन xr प्लस 1 माइनस xr। This is the divided difference of the rth term. We know that it is our rth term. So this equal to xr plus 1 nth minus xr n upon xr plus 1 minus xr. Here fx equals to xn. So xr plus 1 term is x raised to n r plus 1 minus xr raised to n upon xr plus 1 minus xr. So we know that it will be convert into, हम ये जानते हैं एक्सपेंशन x raised to n minus a raised to n upon x minus a equals to x raised to n minus 1, पावर इससे कम होगी, it divides then x raised to n minus 2 into a। हम ये जानते हैं कि इसका जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बनेगी प्लस n minus 3 a square up to x raised to x into a raised to n minus 1। It is the definition of binomial theorem. So we use in this theorem and therefore we get xr plus 1 minus this. So हमारी first term आएगी xr plus 1 n minus 1 plus xr plus 1 n minus 2 into xr plus xr plus 1 into n minus 2 3 into xr, जैसे हमारे पास 3 हुआ xr, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी r प्लस 1 और ये पावर कम होती चली जाएगी और लास्ट आ जाएगी xr प्लस 1 इंटू पावर 0, सो xr रेज़ टू n माइनस 1, इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। फर्स्ट टर्म सेकंड xr, देन xr की पावर बढ़ेगी, लास्ट टर्म इज xr की पावर n माइनस 1। दिस इज द फर्स्ट टर्म f ऑफ xr और xr प्लस 1। देन सिमिलर वे में इसको नेक्स्ट टर्म के लिए करेंगे तो सेकंड टर्म और बढ़ जाएगी, इसी वे में आप करते चले जाएंगे, पावर कम होती चली जाएगी और लास्ट टर्म जो होगी डेल्टा रेज़ टू n, लास्ट टर्म सिमिलर वे में हम आगे बढ़ेंगे तो f ऑफ xr प्लस 1 xr प्लस 2 इक्वल्स टू xr प्लस 1 n माइनस 2 प्लस xr प्लस 1 n माइनस 3 इंटू xr 2 प्लस xr प्लस 1 n माइनस 4 और xr रेज़ टू क्यूब एंड सो ऑन प्लस xr अप टू n माइनस 2। ये हमारे पास पावर 2 इज डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड स्क्वायर, दिस इज डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट। देन जब हम इसको और आगे देखेंगे तो देयरफॉर फॉर nth xr टर्म तो डेल्टा रेज़ टू n जब हम लेंगे इज f xr प्लस 1 अप टू xm तक तो हम लेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म है वो आ जाएगी xr प्लस 1 n माइनस m, जैसे सेकंड में सेकंड देन n माइनस 1 प्लस xr प्लस 1 n माइनस m माइनस 1 इंटू xr एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इज xr रेज़ टू m माइनस n माइनस m एंड और कम हो जाएगा जब n टर्म होगी। सो दिस इज योर इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो भी टर्म होगी वो पावर में पूरी कांस्टेंट टर्म बनेगी। कब? जब हमारे पास f xr से लेके xr n तक जाएंगे तो दिस इंप्लाइज इक्वल्स टू कांस्टेंट।
So this is the theorem which we have to find out the value in terms of this. और ये इसकी एक पहली प्रॉपर्टी थी और दूसरी प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी अगली प्रॉपर्टी आपको प्रूव करूँगी. थैंक यू.